So we are live on Facebook. So good afternoon, everyone. Welcome to one more informative session on Bijam. Today we have Vasudha Binjani with us as an expert for bioenzymes making. तो आज हम जिस चीज को सीखने जा रहे हैं उसके बारे में काफी लोगों ने सुना है पहले से, और ये एक्चुअली अभी अभी नया नया ट्रेंड में आया है। तो आप इस बारे में मुझे लगता है जानते ही हैं हम लोग सब। जस्ट अ मोमेंट। या सो बायोएंजाइम्स के बारे में हम लोग सब कुछ अब जानने लगे हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी ट्रेंडिंग नाउअडेज। तो आप ये समझ लीजिए कि हम जब ये सोचते हैं कि हमारे घर की बाहर की हवा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, इसलिए हम घर में रहना पसंद करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी कोविड का जो समय चल रहा है उसमें ज्यादातर पिछले 1.5 साल से या करीबन 2 साल से हम लोग घर में ही हैं। तो आप ये मानते होंगे कि बाहर की हवा ज्यादा पॉल्यूटेड है और घर में हम लोग बहुत सेफ है, बट ऐसा नहीं है। बट इससे ऑपोजिट है कि घर की हवा हम लोगों की ज्यादा पॉल्यूटेड है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो हमारे घर में क्लीनर्स यूज करते हैं वो क्लीनर्स बहुत सारे केमिकल से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो रेडिली मार्केट में अवेलेबल है। और आप अपने घर में पंखे चलाते हैं, हम लोग अपने घर को पैक करके एसी चलाते हैं, तो जो केमिकल्स आपके क्लीनर्स से रिलीज होते हैं वो आपके घर के अंदर ही रहते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि हम लोगों के घर में ग्रीनरी है तो हम लोगों की हवा फ्रेश होगी, लेकिन एक रूम को आपको ऑक्सीजन से फुल करने के लिए करीबन 20 से 25 पौधे एक 100 स्क्वायर फीट के रूम में आपको जरूरत है। कि उतने पौधे अगर है तो आपके घर की हवा फ्रेश होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और उसके ऑपोजिट में अगर हम उस साथ में क्लीनर्स यूज कर रहे हैं, केमिकल वाले क्लीनर्स, तो हमारे घर की हवा बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। तो आज का हमारा ये सेशन वसुधा बिंजानी के साथ है कि जो आपको नेचुरल ऑर्गेनिक होममेड क्लीनर्स बनाना सिखाएंगी आज, जिसकी प्रैक्टिस मैं खुद पिछले 2 साल से कर रही हूँ एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। और ये इकोनॉमिकल तो है ही, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि घर के हमारे फल के छिलकों से ये बनता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि हम हमारे परिवार की हेल्थ को और उससे भी ज्यादा हम अपने पर्यावरण को बहुत ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई केमिकल क्लीनर यूज करते हैं तो अल्टीमेटली वो सुएज में जाके आपके वाटर बॉडी में मिलता है, जो आपके सॉइल को भी दूषित करता है, आपकी हवा को भी दूषित करता है और अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को दूषित करता है। तो आज की हमारी एक्सपर्ट वसुधा बिंजानी जो है वो चेन्नई से है। हेलो वसुधा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम टू बीजम। वसुधा चेन्नई से है, जिन्होंने एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश की है, कि जिसमें उनका सबसे पहला स्टेप है कि वो ऑर्गेनिक क्लीनर्स घर में बनाती है और अब लोगों को अवेयर करती है अपनी अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स और कुछ वेबिनार्स के माध्यम से। तो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव वसुधा विद अस टुडे, कि जो इस प्रैक्टिस को पिछले 2 साल से कर रही हैं, और उन्होंने इस विषय में वर्कशॉप्स लेना पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट किया है। बट हर वर्कशॉप्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी पॉपुलर। सो वेलकम टू बीजम वसुधा, एंड नाउ ओवर टू वसुधा, कि जो आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में पहले हम लोग इस बायोएंजाइम्स की बनाने की प्रक्रिया सीखेंगे, और उसके बाद में हम लोग लास्ट में 10-15 मिनट के लिए ओपन सेशन करेंगे, जिसमें हम आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो सब सॉल्व करेंगे। और इन द मीन टाइम आई हैव म्यूटेड एवरीवन ऑलरेडी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द मीन टाइम यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। आई विल कन्वे योर क्वेश्चन टू वसुधा। सो ओवर टू वसुधा। Yes. Yeah. So Vasudha, would you like to say something about today's webinar? Yeah. Hello everyone. I welcome you all to a do-it-yourself chemical-free living workshop. You will be learning all. अच्छा, मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश या दोनों मिक्स? Mix भी चलेगा, but Hindi will be preferable. Yeah, because it will be easier for everyone to actually understand. आज आप सब नेचुरल केमिकल फ्री नेचुरल क्लीनर्स जो घर में अपने यूज कर सकते हैं वो बनाना सीखेंगे। एंड आई एम सो glad that you all are here. I thank you all for taking out time from your busy schedule
and investing it in a greener and healthier planet for this generation and generations to come. मैं मार्गरेट मेड का एक कोट बोलना चाहूंगी. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. In fact, it is the only thing that ever has. So we are those thoughtful, committed, responsible citizens. अपने सब हाथ जोड़ के we will make this world chemical free and अपने घर के वातावरण को तो ठीक करेंगे ही, पूरे दुनिया के वातावरण को भी ठीक कर सकेंगे. So today I will be sharing my sustainable journey, and I'm hoping that I'm able to inspire you all. So I am Vasudha Brinjani, your host for this session, and today I will be talking about miracle enzyme. Soon you will get to know why I call this miracle enzyme. So I'll just share my presentation with you all. Can you all see my screen? Sheetal ji? Yeah, we can see. Yes. Vasudha, you can Yes. go ahead. Okay. So I was born in Kolkata. A little about me before I start telling about my sustainable journey. So I was born in Kolkata, married in Chennai. Now I have a beautiful daughter, Rishika, and my area of interest have always been yoga, dance, and singing. And now definitely it is sustainable living. शुरू में बचपन में पापा गार्डनिंग किया करते थे, पर गार्डनिंग का ऐसा इंटरेस्ट था नहीं. एंड यहाँ पे आने के बाद एक कजन को देखा जो उतने वेजिटेबल्स अपना उगा रहे थे. सो द होल आइडिया ऑफ हैविंग योर ओन ग्रोन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, इट ड्रोव मी टू स्टार्ट माय ओन वेजी पैच. पिछले 1-1.5 साल से मैं टेरेस गार्डनिंग कर रही हूँ. So and I wanted Rishika to get connected with nature from the very beginning and to give her the chemical free food. So it so became a fun activity that, you know, we both used to look forward to this journey. So this is Rishika and myself. We're having a sweet conversation in my terrace garden while she is plucking the fruits of her labor. एंड हम लोग कंपोस्टिंग करना चालू किए. फर्टिलाइजर्स चाहिए थे, खाद चाहिए. जब घर में ही वेट वेस्ट निकल रहे हैं जो खाद में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद दैट. सो आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल बकेट, जो अपने पानी जिससे नहाते हैं, स्मॉल बकेट से चालू किया. अब तो ड्रम्स में बनने लगे हैं. एंड द होल फीलिंग ऑफ हैविंग दैट ब्लैक गोल्ड सॉइल इन योर हैंड, वो गीली मिट्टी की खुशबू कुछ अलग है. यू हैव टू experience this whole thing to you know, make it and experience it. So yes, so we needed fertilizers. So फिर पापा ने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के कैंपेन चल रही थी, बायो एंजाइम के बारे में बता रहे थे. तो देन आई गॉट टू नो अबाउट बायो एंजाइम. दिस बायो एंजाइम, आई कॉल इट अ मिरेकल एंजाइम. आपको सून पता चल जाएगा, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो कॉल दिस मिरेकल एंजाइम. सो आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल बैच, एंड वो इतने सब जगह, सब घर में हर चीज को साफ कर सकते हैं उससे. तो द बैचेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. So when I saw the miracles it was creating in my house in the cleaning perspective, so I really wanted to spread this awareness to everybody, because 1 ml bioenzyme अपने 1 लीटर पानी को शुद्ध कर देता है. So और अपने जो केमिकल्स यूज करते हैं, पता नहीं उसके अंदर उन लोग क्या क्या केमिकल्स मिलाते. वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट ऑल्सो, किस तरीके से वो अपने बॉडी को हार्म करते हैं. बट व्हेन वी आर मेकिंग दिस, वी नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स हैव गॉन इनसाइड. और ये उतना ही सफाई, वैसा ही सफाई करता है जैसे अपने केमिकल क्लीनर्स करते हैं. तो व्हाई विल वी गो विद केमिकल क्लीनर्स जो अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते चले जा रहे हैं. और ये जब अपने ड्रेन से जा रहा है तो अपने एनवायरनमेंट को प्योर करते चला जा रहा है. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन द टू.
So that is why the switch is required. And definitely I want to support the community and make the community sustainable for future. So in today's session, we will be covering what is bioenzyme, why should we shift to bioenzyme, bioenzyme बनाएं कैसे, and उसका use कैसे करेंगे. So what is bioenzyme? Bioenzyme, it is an organically fermented natural cleaner which can replace all the harsh chemicals, आपके सबीना, विम, निर्मा, हार्पिक, सब चीजों का replacement is one and only bioenzyme. We typically that we use in a household सब चीजों को replace करता है. It helps us in getting rid of stains, odor and other harmful microbes. तो ये जो अपने chemicals use करते हैं ना, वो good microbes, bad microbes सबको खत्म कर देते हैं. But these, when we use bioenzyme, तो वो good microbes के quantity को बढ़ा के and bad microbes को उन लोग खा जाते हैं. And they neutralize the toxins and the pollutants that is there in the air. You want to tell Rishika? You want to tell now? So Rishika wants to share कि वो where her mother uses bioenzyme. Bioenzyme मम्मी कहाँ use करती है बेटा? Toilet. Yeah, tell them. And? Basin. Okay. And the Bal. Okay. body. Body. Yes. Bathroom. Basin. Clothes. हाँ. And utensils. बर्तन भी धोते हैं ना? And Matha. Yes. Yeah, Very good. it's so nice to see your daughter is speaking about the bioenzymes actually. Yes. वसुधा, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन को हमको ये बहुत ट्रेनिंग जरूरी अभी है. से देनी चाहिए. Absolutely. Yes. This was the whole reason for me to start all this. Okay. Yes. Yeah. So, science behind bioenzyme is microorganisms होते हैं जो enzymes को release करते हैं, and ये जो complex food matters होते हैं, अपने जो peels डालेंगे bioenzyme बनाने के लिए, that will break down into smaller compounds, and in this process gas release होता है, and what the end result is bioenzyme. So microbes अपना hard labor करते हैं and we enjoy their fruit by having the bioenzyme. Now अपने को bioenzyme के तरफ क्यों बढ़ना है? It is our right to have clean water and clean rivers. जैसे जैसे अपनी सबने सुना है ये lake that caught fire, Belandur Lake in Bangalore. Yes. The lake that caught fire, that was frothing. Earlier they had that white fog, white जो froth होता है वो था, but recently उसमें fire लगा है Bangalore के. Yeah, we have heard about all this is chemicals going from our homes. So as the अपना population बढ़ते चला जा रहा है, अपने convenience driven होते जा रहे हैं और pollution भी बढ़ते चला जा रहा है. So it is our responsibility अपने pollution को तो कम करना है, उसको prevent कैसे करना है वो भी बहुत जरूरी है. And ये सब चीजें सिर्फ एक solution है, bioenzyme and its variations को use करके अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं. ये अपने वातावरण के लिए तो अच्छा है ही, अपने घर वालों के हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है. तो आपको जो समझ में, आपको जिस तरह इंक्लिनेशन है वातावरण के लिए है तो करिए, अपने हेल्थ के लिए है तो करिए, अपने परिवार वालों के हेल्थ के लिए है तो करिए. सो अपने को पता भी नहीं है कि अपने जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या केमिकल रेसिड्यूज अपने घर में रह जाते हैं, यूटेंसिल्स अपने धो रहे हैं, विम के कुछ चीजें उसमें रह जा रहे हैं और क्या अपने को नुकसान करेगा, जो कैंसर, इतनी बीमारियां जो फैल रही है, व्हाट इट ऑल कैन बी रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स. सो फॉर दिस, these are the reasons why should we shift to bioenzyme. The 3 E's of miracle enzyme, which I call bioenzyme, which I call miracle enzyme, is eco-friendly. As you can see, कि
वो फ्रॉथिंग होता है और बायो एंजाइम से पूरा क्लीन हो जाता है. एंड व्हेन वी आर मेकिंग, अपने घर में बना रहे हैं, अपने जो प्लास्टिक ऑलरेडी हैं उसे यूज कर रहे हैं. I don't have to buy. It's been so many months I have not used Harpic. 1 साल हो गया होगा Harpic मैंने यूज नहीं किया है. So you don't have to buy those store bought plastic bottles. Plastic ऐसे अपने कम कर देंगे तो it is very good for the environment. It is very effective. हर जगह, as my daughter told you, everywhere it can be used. So it is super effective. एक बायोएंजाइम और पूरी घर की सफाई उससे हो जाती है. And as I told you, 1 ml decontaminates 1000 ml of water. ये इकोनॉमिकल तो है ही, आपको आगे पता चल ही जाएगा कि क्या क्या उसमें डलेगा, तो कुछ है ही नहीं. We are just using our waste to create bioenzyme. And it went like. So this is how we both threw the chemical cleaners into the dustbin and switched to bioenzyme. So आप देख सकते हैं क्या क्या uses है. Surface cleaner, फ्लोर, टाइल, टॉयलेट, स्टोव, चिमनी, विंडो, कार वॉश, सब चीजों को धो सकते हैं बायोएंजाइम से. डर्ट रिमूवर, लॉन्ड्री लिक्विड, वेसल क्लीनर, बर्तन धुल सकते हैं. शू के ओडोर, इट इज वेरी गुड. अपने जो टॉयलेट से जो स्मेल है, सूसू का स्मेल या उल्टी कोई किया है उसका स्मेल हो, यू जस्ट नीड टू डाइल्यूट दिस बायोएंजाइम एंड स्प्रे इट. It takes away all the bad odor. It is antibacterial, antiviral. It increases the positive microbes, good microbes around us. Pest control, अपने gardening करते हैं तो it is very good. Pest control, plant care, अपने flowers bloom करते हैं during the blooming period. When you add these, तो और bloom करते हैं flowers. वॉशिंग द वेजिटेबल्स, अभी कोविड के समय में आप लोग सब यूज कर ही रहे होंगे, कभी नमक या विनेगर. सो वॉशिंग द वेजिटेबल्स, इट टेक्स अवे ऑल द टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इट. ऊपर से 10-15 मिनट्स के लिए भिगो के एंड फिर अच्छे पानी से वापस से धो के एंड सुखा दीजिए. एज अ पर्सनल केयर, एज माई डॉटर टोल्ड, आई यूज इट इन माई हेयर फॉर बेदिंग. So this is a study that was conducted by Art of Living. As you can see, तो वो लेक में जितना भी जो गंदगी था, जो मॉस, एल्गे थे, वो सब निकल गए. Quality of water improved by 60% in 45 days. And 1 ml can clear 1000 ml, as I told you, and the algae was removed. Now, कैसे बनाएं bioenzyme? What do we need? We need 100 grams of गुड़, 300 ग्राम अपने को सिट्रस पील्स चाहिए. सिट्रस पील्स क्या है? ऑरेंज पील्स, लेमन पील्स, मौसम्बी के पील्स या पाइनएप्पल भी आप ले सकते हैं. एंड 1 लीटर पानी में आपको ये सब चीजों को मिक्स करके 2 लीटर के प्लास्टिक के बॉटल में डालना है. दिस इज द प्रोपोर्शन. बेसिकली द प्रोपोर्शन इज 1:3:1000. 1:3:10. Sorry, 1:3:10. Make a note of this. Otherwise, you can take a photo. So, whoever जिसने भी ये तैयारी करके रखे हैं, तो अपने सेशन के एंड में एक साथ बना लेंगे. 1:3:10.
सिंपल। आपको बस ये चीजों को एक डब्बे में डालना है, प्लास्टिक एयरटाइट कंटेनर, एंड यूर डन। दिस प्रोसेस टेक्स 3 months, 3 महीना लगता है इसको बनने के लिए। So I'll tell you what are the things that you have to take care of. Ensure the container is airtight and made of plastic. Plastic बहुत जरूरी है because gas release होता है जैसे मैंने बोला. So plastic container is very much essential and airtight होना जरूरी है क्योंकि we don't want ants and insects to get attracted. तो airtight जरूरी है. 10-20% space in the container होना बहुत जरूरी है because gas हो रहा है form. So एक्सपैंड करता है, इसीलिए अपने ग्लास में नहीं बना सकते हैं क्योंकि इट विल एक्सपैंड. कीप द कंटेनर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट. धूप में नहीं रखना है, कहीं भी और रख सकते हैं, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है. स्टार्ट डेट ऑन योर कंटेनर. कंटेनर में जिस दिन आपने सब कुछ डाला है वो डेट लिख दीजिए क्योंकि 3 महीना लगेगा आपको बनने के लिए. सो यू विल हैव टू रेफर टू द डेट व्हेन यू मेड इट. Ensure to release the gas buildup every day for first 2 weeks. First 2 weeks तक आप हल्का सा इसको खोलेंगे ऐसे, that's it, and बंद कर देंगे. Bioenzyme is ready at the end of 3 months. It has no expiry. That's the best part. It has no expiry. And I request you all to make in big batches. अगर जूस इकट्ठा कर लीजिए, जो पील्स आप पी के 2-3 दिन में इकट्ठा हो जाएगा. 900 grams is not much. 5 लीटर के जार में 3 लीटर से चालू करिए बिकॉज 3 महीना लगेगा ये बनने में और हर जगह आपका काम आएगा. How will it look at the end of 3 months? So this is how it will look. Pulpy enzyme नीचे settle हुआ है, क्लियर एंजाइम बीच में है और रेसिड्यू पील्स जो रहते हैं ना, कुछ कुछ गल के नीचे आ जाते हैं जो पील्स रहते हैं और कुछ थोड़े से ऊपर में फ्लोट भी करते हैं. आई विल जस्ट शो यू माय रेडी बैच. सो यू कैन सी यहाँ पे ये जो पील्स हैं वो काफी नीचे आ गए, मशी भी हो जाते हैं, कुछ कुछ एकदम चर्न हो जाएंगे. अच्छा पल्पी एंजाइम निकल जाएगा. बीच का ये लिक्विड है और थोड़े बहुत 3-4 ऊपर फ्लोट भी कर रहे हैं. सो दिस इज रेडी. As you can see over here also, कितना clearly दिख रहा है ये pulpy and this is the clear liquid. You need to separate it and keep it because pulpy वाला जो है वो अपने heavy duty cleaner है और liquid वाला अपने general cleaning में काम आता है. So this is how I sieve. So what do you need? सीवर चाहिए, सीवर में डालने का है, पतला पानी को अलग सेपरेट करना है, मोटा को अलग सेपरेट करना है और जो एकदम मशी हो गए हैं, गल गए हैं, उसको पानी में डाल के मिक्सी में चर्न करके रख सकते हैं. So this is how लगेगा. क्लियर बायोएंजाइम, आपका मोटा पल्पी बायोएंजाइम और ये रेसिड्यू है बायोएंजाइम का जो बनने के बाद. ये जो रेसिड्यू है ये अगर अपने 10% या कम ज्यादा में भी कोई फर्क नहीं है, 10% ये अपने बायोएंजाइम जो अपने नेक्स्ट बैच बनाएंगे, अभी तो 3 महीना लगेगा, नेक्स्ट बैच जब अपने बनाएंगे ये 10% डाल देंगे तो अपना बायोएंजाइम जो है 1 month to 45 days में रेडी हो जाएगा. इट विल बी रेडी इन 45 days. इट विल वर्क एज अ स्टार्टर. तो अगर आप किसी को जानते हैं जैसे शीतल जी, आई नो, माय मदर आई नो, हु आर इनटू मेकिंग बायोएंजाइम, आप उनसे ये स्टार्टर जरूर ले लीजिए ताकि आपका बायोएंजाइम 45 डेज में बन जाए और हम दिवाली की सफाई बायोएंजाइम से ही करें. हाउ टू यूज बायोएंजाइम. सो ये बेसिक रेशियोज है बट मैं बोलना चाहूंगी कि अभी मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्यादा रेशियोज में अपने को बेसिक चीजें ठीक है बट नाउ मतलब वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट तो यू नो एक अंदाज से अपने बस उतना लेके और पानी में डाल देते हैं. उसमें कम हुआ ज्यादा हुआ कोई हानि ही नहीं है बेसिकली. सो बेसिक रेशियोज इज कि हाफ बकेट पानी में पोछा मारना है तो 20 से 30 ml बायोएंजाइम डाल लीजिए. एंड टाइल्स एंड ऑल के लिए तो बहुत अच्छा है. मार्बल में यू हैव टू टेस्ट पैच एंड डू इट बिकॉज
मार्बल डिफरेंट नेचुरल पत्थर है, वो कैसे सीप इन करेगा, क्या होगा, बट लिटिल टेस्ट पैच यू कैन डू अपने जहां पे आपका मार्बल सोफा के नीचे या वैसे एक डॉट डाल के देख सकते हैं, नहीं होता है देन यू कैन यूज इट एज अ टॉयलेट क्लीनर। अपने पल्पी बायोएंजाइम जो है ना मोटा वाला, दैट यू नीड टू यूज। बस 10 मिनट्स डालेंगे, रखेंगे थोड़ी देर के लिए या हाफ एन आवर के लिए, एंड जस्ट स्क्रब इट जस्ट लाइक हार्पिक। इट इज अ बाथरूम क्लीनर। 30 ml एक मग में डाल के पूरा स्क्रब कर दीजिए। और टफ स्टेन्स है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यू कैन अप्लाई एंड जस्ट स्क्रब इट। Glass mirror cabinet, only 1 ml you need to put in 10 ml of the water, and स्प्रे में डाल के, कॉलिन का जरूरत नहीं है, स्प्रे में डाल दीजिए। एंड जहां भी कांच है, मिरर है, ग्लास है, किचन कैबिनेट बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। टैप्स एंड फॉसेट्स दे शाइन। लॉन्ड्री लिक्विड बनाना है तो 2 cups बायोएंजाइम लीजिए, 2 cups वाटर एंड 1 cup of रीठा. So this you have to keep it for 7 days, and then you can put the 150 ml of this after straining it. ये रीठा वापस से यूज कर सकते हैं। ये रीठा को आप 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, उतना उसमें सैपोनिन्स रहते हैं कि 3 से 4 बार आप, ये मेरा लॉन्ड्री लिक्विड है। So you can see the amount of froth it is having. रीठा तो अपने सबको पता ही होगा, सोप नट्स। So इसको डाल के छोड़ दीजिए, एंड देन अगेन यू पुट बायोएंजाइम एंड वाटर एंड कीप इट। जब तक आपका वो दूसरा खत्म होगा तब तक ये रेडी हो जाएगा। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स आल्सो। डिश वॉश के लिए भी सेम चीज जो मैंने बोला, या तो आप रीठा 100 ग्राम रीठा को 8 कप पानी में बॉईल कर दीजिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर तक बॉईल कर दीजिए, और वो रीठा का पानी भी आप यूज कर सकते हैं। हैंड वॉश लिक्विड अगेन, थोड़ा रीठा का पानी, थोड़ा हाफ बायोएंजाइम और मिक्स करके, इट्स बीन लाइक 2-3 months now that I am only using this as my hand wash liquid. Froth doesn't mean that it cleans well. अगर फ्रॉथ क्लीन करता तो अपने नदियां में जो फ्रॉथ है वो नदी को क्यों नहीं क्लीन कर देता है? तो फ्रॉथ इज नॉट एन इंडिकेटर दैट इट इज क्लीनिंग वेल। चिमनी क्लीनिंग, पल्पी बायोएंजाइम तेल को बहुत अच्छे से ये पल्पी बायोएंजाइम निकाल देता है। गैस बर्नर, ड्रेन क्लीनिंग, 1 कप गर्म पानी डालिए, 1 कप बायोएंजाइम डालिए और छोड़िए। एक्चुअली मैं तो अब बायोएंजाइम सब जगह यूज करने लग गई ना, तो ड्रेन तो ब्लॉक होता ही नहीं है, क्योंकि बायोएंजाइम ही जाता है, वो क्लियर करते चला जाता है। ड्रेन ब्लॉक का कोई इश्यू ही नहीं है। मस्कीटो रेपेलेंट 40% नीम ऑयल डाल दीजिए बायोएंजाइम में और छिड़क दीजिए। ज्वेलरी में भी आप आराम से थोड़ा सा डाल दीजिए पानी में। ज्वेलरी भी बहुत अच्छा, डायमंड आई हैव सीन बहुत शाइन कर देता है, तुरंत सब गंदगी निकल जाती है। आई यूज इट एज अ हेयर कंडीशनर लास्ट में। मैं तो बाल धोई भी हूँ रीठा और बायोएंजाइम कॉम्बिनेशन से, एंड आई हैव यूज इट एज अ कंडीशनर लास्ट में। तो मैं करती हूँ, ऑल द एंटैंगल्ड थिंग ऑल गोज अवे। इट्स बीन 6 months आई हैव नॉट यूज्ड केमिकल शैम्पू। कार वॉश 1:20 का रेशियो है, वेजिटेबल वॉशिंग 1:10, प्लांट वाटरिंग 1:500, and pest is 1:100. All these ratios I will share with Sheetal ji, and then you will it will be easy for you to follow. Or else they can take a screenshot if they want to, because all are not from Bijam. So if they are not from Bijam, if they are not from Bijam, I will be sharing my number. Please, I am here to help you all. So you can get in touch with me and I'll share the PDF with you, whoever are interested. You share the PDF to me once, so that yes, we can share in the Bijam group. और दूसरों को जो भी आपको पर्सनल कांटेक्ट करते हैं, yes. So this is before and after, some pictures. So you can see the taps and faucets. अब तो मेरे taps एकदम लगता है कि हमेशा नए ही रहते हैं. So this is after using the pulpy enzyme. You can see तवा कैसे clean हो गया एकदम. And the laundry also, you can see the socks. This is my jewelry, and चांदी, पीतल, सब चीजों को ये क्लीन कर देते हैं।
You can see the cabinets कैसे दाग लगे हुए हैं. Laminated cabinets बहुत अच्छे से clean होते हैं. And the glass also you can see. This is the on the right side. So I'll just come to the frequently asked questions. Can a metal glass container be used to make bioenzyme? Nahi. We have to use plastic only. Is it necessary to use an airtight container? Yes. Why should we open and close the container? Gas release करने के लिए. What's the smell of bioenzyme? Is there an unpleasant odor? नहीं, क्योंकि सिट्रस से अपने बनाते हैं. होम क्लीनिंग जो होता है सिट्रस से होता है. Citrus से होता है, so that is why it has a very citrusy smell. It doesn't smell unpleasant at all. There is fungus forming in my bioenzyme solution. It's absolutely okay. No problem. Does the enzyme have an expiry date? That's the best part. It doesn't expire. Can I use the full fruit instead of the peel? Why do you want to do that? Juice पीजिए और peels use करिए बनाने में. How to get so many peels at a time? आप या तो फ्रिज में स्टोर करते रहिए इसको. एक तो बहुत स्टेल नहीं करना है, पील्स को बहुत स्टेल नहीं करना है, फ्रेश रहना चाहिए. आप फ्रिज में स्टोर करते रहिए, 2-3 दिन में हो ही जाएगा. अगर और बड़ा परिवार है तो 900 ग्राम्स तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाएगा. एंड अगर नहीं तो फ्रूट वेंडर के पास चले जाइए. बिग बैच में बनाना है फ्रूट, कोई भी जूस शॉप में चले जाइए. दे विल बी थ्रोइंग द वेस्ट ओनली. आप वहां से लेके आ जाइए, वहां से बना लीजिए. Can we use other fruit, vegetable peels or flower petals in making this enzyme? Yes, कोई भी fruit, vegetable peels आप ले सकते हैं सिवाय अदरक के और potato peels and all. But कोई भी fruit and vegetable and flower petals लेके आप बना सकते हैं. जो घर का क्लीनिंग करना है वो अपने को सिर्फ सिट्रस से करना है. Because that will give best results. आज अपने को सबको पता है कि लेमन और के क्या क्वालिटी है with for the cleaning purpose. So घर का क्लीनिंग सिट्रस से करना है. और सब जो आप एंजाइम बना रहे हैं that is called garbage enzyme, not the flower one. The all the fruit and vegetable mixture आप बनाइए, that is garbage enzyme and that is very good for your plants. Cleaning the lake, water bodies. लोग जाते हैं ड्रम भर भर के जाते हैं, लेक क्लीनिंग करते हैं. So for those purposes we can use the garbage enzyme, क्योंकि उसमें स्मेल जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना सिट्रस में रहेगा, because it will be mixture of everything. Flowers and all में rose, marigold. I have been trying with rose, marigold and hibiscus, and उससे नहा सकते हैं. These flower enzymes अपने स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं, जो फंगस होता है स्किन में, उसको एकदम ठीक कर देता है. इट इज वेरी गुड. तो आप नहा सकते हैं, बाल्टी में डाल के छोड़ दीजिए. रात को ही डाल के छोड़ने से बोलते हैं कि माइक्रोब्स और भर जाते हैं. अभी प्लांट्स एंड ऑल में भी डालना है ना, एक दिन पहले डाल के छोड़ दीजिए पानी में और फिर दीजिए. इट विल मल्टीप्लाई, द माइक्रोब्स विल मल्टीप्लाई. तो अपने उससे नहा सकते हैं. आई नो पीपल, मैंने भी नहाया है, जो बायो एंजाइम लिया, हल्का पानी लिया, बेसन या कोई भी आपके उपटन जो चीजें हैं उसको मिक्स किया एंड देन जस्ट स्क्रब इट. तो आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस. इट वाज अ मिरेकल. मतलब मैं यूट्यूब में एक वीडियो में देखी थी कि कान को में खुजली थी उनको और उन्होंने यूज किया था एंड दर्द चला गया कान का. I don't know why that day, that very day, रात को मेरा कान कभी नहीं दुखा. इतना जोर का 1 year was paining and it just struck me कि मैं क्यों नहीं एंजाइम यूज करके देखूं. And I went, those enzyme मैंने बड में लिया and I just swirled it. 2 seconds, you won't believe, 2 seconds the ache was gone. As if मतलब वो पेन आया था मेरे को टेस्ट करने के लिए कि you use bioenzyme and see, it's miracle. So it is actually miraculous. and हर जगह पोल्यूशन, अपने जो एयर पोल्यूशन के लिए भी अभी मैं लास्ट अटेंड की थी जो बायो एंजाइम इन्वेंट किए हैं डॉक्टर रोसुकुन.
तो उनका ऑडियो सुना था एंड शी वाज टेलिंग हर जगह मतलब ग्लोबल वार्मिंग में भी ये हेल्प करेगा। अपने मैं आजकल रोज एंजाइम को डाइल्यूट करके एंड आई पुट इट एंड आई स्प्रे कर देती हूँ थोड़ा सा रूम में, सो बैड ओडोर तो ले ही जाता है एंड आई विल बी हैविंग ऑल द गुड माइक्रोब्स एवरीवेयर। आई शो यू माय बैचेस दैट आई एम मेकिंग। So this is rice enzyme. I'll quickly go through the rice enzyme and then we'll take the questions. So rice enzyme आपका 10 days में ready हो जाएगा. So till the time you're making bioenzyme जो 3 महीना लगेगा, और अगर starter ले लिए कहीं से जुगाड़ कर लिए तो 1 month लगेगा. You can get started with rice enzyme. जब अपने राइस को भिगोते हैं तो उसका first 2 washes पानी को अपने को इकट्ठा करना है. इट डजंट मैटर अगर उसमें बोरिक पाउडर है नहीं है, पर ज्यादा पानी देके नहीं वॉश करना है. वी वांट अ स्ट्रॉन्ग एंजाइम, तो कम पानी देके और वॉश करना है. वो पानी 10 कप्स आपको लेना है पानी एंड 1 कप आपको गुड़ लेना है एंड यू हैव टू ऐड दिस टू एन एयरटाइट कंटेनर एंड एवरी 10 days इसमें भी गैस बनता है. यू हैव टू रिलीज द गैस एवरी 10 days एवरी डे एंड 10th डे में आपका ये एंजाइम रेडी हो जाता है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, योर राइस एंजाइम विल बी रेडी इन 10 days. It's definitely not a substitute for BE as it has nice citrusy smell. BE has nice citrusy smell, but इसका जो स्मेल है वो उतना वैसा नहीं है जैसा बायो एंजाइम का. बट in my sessions, wherever I have talked about rice enzyme and in my group that I'm having in WhatsApp, everybody praises this rice enzyme. They're very happy with this rice enzyme. There are people who are going on making in batches, but it's pretty effective cleaner and quick to make. Rice enzyme will not smell pleasant. That's the drawback to this excellent cleaner. Because of the smell issue, we cannot use it as surface cleaner for mopping. Mopping के नहीं use नहीं कर सकते. कहाँ use करेंगे? जहाँ पे अपने वापस से अच्छे पानी से पोंछने वाले हैं वहाँ use करेंगे. Use it only where you will rinse it off with plain water. Its shelf life is low. ये 10 दिन तक ही use कर सकते हैं. उसके बाद use नहीं कर सकते. Don't be fooled by its simplicity. It is an excellent cleaner. स्मॉल बैचेस में बनाइए और यूज करिए. कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? ग्लास क्लीनर, मिरर क्लीनर, लाइम स्केल बिल्डअप को हटाता है. मैंने टॉयलेट में भी यूज किया है, कमोड में भी यूज किया है. पोर्सलिन एंड ऑल बहुत एकदम चमक जाता है. टैप भी बहुत चमक जाता है. एंड इसको डाइल्यूट करके यूज नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यूज करना है. स्विच बोर्ड्स, ग्राइंड ग्रीस क्लीनर, तवा में आप डालेंगे और हल्का सा ऐसे बस लगाएंगे और वो तेल बस छूटने लग जाता है. कढ़ाई, तवा लोग भिगो के छोड़ देते हैं. नेक्स्ट डे सुबह पूरा क्लीन सिल्वरवेयर ऑल्सो वेरी वेल. So yes, my motive right now is this Diwali, let's move towards a chemical-free, sustainable cleaning by cleaning our entire house with bioenzyme and Rita. तो अभी दिवाली के समय में सब लोग साफ सफाई में लगेंगे और सब लोग अगर ये यूज करेंगे, ये जब पानी जाके गटर से जाके जब नदी में मिलेगी, अपने नदी को प्योरीफाई करेंगे. ये जरूर आप हमेशा ख्याल रखिएगा. So thank you everyone. Best of luck for your sustainable journey. This is me and my daughter, and there are more additions to it. So we have a lot of bioenzyme production now because I want to make this available to people who have not yet started, want to experience it, don't want to wait for 3 months. So I am doing all the mehnat of making the bioenzyme and providing it to the people. Thank you. You can follow me Instagram ID. आप screenshot ले सकते हैं. मेरा number जरूर note कर लीजिए. And whoever is interested, I can add them, to my WhatsApp group. So we keep sharing. This bioenzyme, it is an experiment. मतलब अपने को हर एक को ये experiment करना है. क्या चीज से क्या फायदा होगा, क्या चीज. अभी मैं ये बनाई हूँ, ये नीम एंजाइम है. ये नीम डले हुए हैं इसमें. मेरे पेड़ों के लिए मैंने ये बनाया एज अ इंसेक्ट रेपेलेंट. ये मेरा मैरीगोल्ड का बायोएंजाइम है. ये रोज बायोएंजाइम है. एंड मेनी अदर पीपल एलोवेरा का बनाया है. सो
ये चिली एंड गार्लिक है। चिली गार्लिक अपने पीस के इंसेक्ट रेपेलेंट जैसे यूज करते, बायो एंजाइम अगर बनाया है तो फिर वो तो खराब होना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, बना हुआ पड़ा है, डाला, मिक्स किया और स्प्रे किया। तो इट हैज नो एक्सपायरी, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग। एंड हर चीजों को अपने को बना के एक्सप्लोर करना है। हाइबिस्कस का किसी ने बनाया एंड दे आर यूजिंग, जब भी बाल काला करना होता है हल्का सा ऐसे लगा के और थोड़ी देर सुखा देते हैं और चले जाते हैं पार्टी में। सो आई एम सिंस 2 months मैंने जब ये चालू किया मुझे इतना नहीं पता था, अब मैं और आगे मतलब सीखती जा रही हूँ। You know, this is an ongoing process. So in this group, matlab, it is not only me who is guiding, you know, there are others also who know about it, and we all help each other, you know, to move forward in this journey. तो अभी कुछ questions अगर हैं तो we can. Yeah, it was an excellent presentation by you, Vasudha, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन सब होंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर सब चीज में अपने हो गए हैं इसके लिए, बट स्टिल वी हैव सम क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे अब। या so let me just read out the questions. Yeah, so rise and can we see everybody, can we see the people and everybody, I would love to see your face. How? Yeah, so rice enzyme का ratio फिर से एक बार वसुधा just explain. 10:1. So 10 parts of your washed rice water and 1 part of गुड़, 10 कप 1 कप मिक्स करना है, बंद करना है, 10 दिन तक आपको हल्का सा खोलना है और बंद करना है। That's it. 10 days के बाद it will be ready. Right. And one more question, which enzyme will be suitable for mosquito abaying? मस्कीटो के लिए कोई भी एंजाइम अपन, जैसे ये वाला जो नीम एंजाइम है, आई थिंक दैट विल बी बेटर ऑप्शन। आई हैव नॉट ट्राइड, अभी ये बन रहा है। अदरवाइज कोई भी सिट्रस एंजाइम या जो भी एंजाइम ले रहे हैं आप, उसमें नीम ऑयल मिला दीजिए, थोड़ा सा रीठा मिला दीजिए, बिकॉज मिक्स करने के लिए यू विल नीड अ लिटिल रीठा एंड ये जो लिक्विड है बायो एंजाइम का, एंड इसमें 40% नीम ऑयल एंड देन जस्ट स्प्रे इट। या And how to make shampoo from bioenzyme? Meera ji is asking. जो मैंने बताया ना 2:2:1 लॉन्ड्री का जो बताया मैंने, same thing I have used for hair also. Try, do a patch test, आपको कैसा सूट होता है, but definitely ये अपने सॉफ्ट कर देता है बाल को और entangle एकदम भी नहीं होता है। Right. So Sarita ji, she has just explained कैसे शैम्पू बनाते हैं. So is the same actually. Yeah. Same bioenzyme for all. Yes, it is the same proportion for every all the other things. Same 1:3:10. Yeah. So how long can we keep रीठा? रीठा आप वही 7 days भी रखिए या 20 days भी रखिए। मेरा ये रीठा मैंने डाल के पता भी नहीं है कि कितने दिन हो गए, बट 3-4 बार इसको यूज कर सकते हैं। दिस रीठा एक यूज में खत्म नहीं होता है। जब आप अपने इन्फ्यूज कर रहे हैं तो आप इसको 3-4 बार ऐसे यूज कर सकते हैं। राइट। हाँ। So can you show some रीठाs if you have with you, Vasudha? I have it down actually, and I don't know if you can see. So, it's very easily available at the kirana shop. Actually, मोदी की दुकान में बहुत easily मिल जाता है। Balls ऐसे brown balls हैं। Yeah. तो अपने अरीठा का ये एक चीज ना? हाँ, अरीठा। Yes. अरीठा is the रीठा। Okay. Yeah, because initially छोटे थे तो अरीठा ही यूज करते थे। वही वापस जाना है। Yes. बस। Right. And there were some more questions. Save these bioenzyme for washing machine and dishwasher. I have been using my washing machine since 4 months now, I think so. वॉशिंग मशीन के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, धीरे आप ये स्टेप बढ़ाइए। इतना सारा इंफॉर्मेशन सब जगह यूज करना आप ट्राई करेंगे, मे बी आप नहीं समझ पाए, झुंझला जाए,
धीरे धीरे एक एक चीज पकड़िए। आज से मैं पोछा चालू करूंगी, फिर मैं बर्तन में यूज करना चालू करूंगी, मैं ये अपने कपड़े धोने में चालू करूंगी। धीरे धीरे बढ़ाइए कदम। मतलब इट्स नॉट दैट कि मुझे ट्रबल नहीं हुआ था, बट you will keep on going in this journey. Once you start, you cannot go back on this journey. तो कपड़े मेरे पूरे, मैं बायो एंजाइम में आजकल पहले 1 घंटा भिगो के रख देती हूँ, ताकि ऊपर के जितने भी डर्ट हैं सब निकल जाते हैं बायो एंजाइम। इफ यू हैव वॉशिंग मशीन में सोक करने का ऑप्शन है तो आप मतलब नहीं तो बीच में 1 घंटा छोड़ दीजिए। अगर जितना वो भीगा हुआ रहेगा उतना अच्छे से और वो काम करेगा एंड गुड माइक्रोब्स को अपने कपड़े में छोड़ देगा। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। तो आराम से डिश वॉश में भी यूज कर सकते हैं आराम से। आई थिंक डिश वॉश आई डोंट हैव, बट यू विल हैव टू मेक क्यूब्स आई थिंक डिश वॉश के लिए। तो आप वो लिक्विड, वही सेम चीज के लिक्विड को फ्रीजर में डाल के वो क्यूब्स बना लीजिए, आइस क्यूब्स यानी क्यूब डाल दीजिए। आई तो रियली वांट टू बाय अ डिश वॉश टू स्टार्ट यूजिंग दिस because it was actually the question asked about dishwasher in the beginning, but your presentation was going on, that is why I've just asked them to wait. But I think Meena ji, your question is answered now. Yeah. So will it be useful for internal cleaning? I'm not got this question. What about internal cleaning? I don't know. सिल्वरवेयर तो मैंने बताया है। हाँ. So can I suggest bioenzyme to my local municipality for awaying mosquito, because they use chemicals in society? Is this because I think you need to make bioenzymes in a so huge batch, then only you can serve to the municipality and to the local actually streets. What you say, Vasudha? Yes. अभी ये बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स अकेडमी खुली है, so who all are interested, it is a very good venture. Who all are interested, please come ahead, let's start making together. But सबसे पहले अपने घर से चालू करिए, वही मैं बोलना चाहूंगी, बहुत जरूरी है। मैं आपको बना के दे दूंगी या जो भी बना रहे वो दे देंगे, पर घर में अगर आप बनाओगे तो आपको जितना सस्ता पड़ेगा वो बाहर बनाने में सस्ता तो नहीं पड़ेगा। तो if you want to go economical, that is the best way to make it at home. और एक बार ये प्रोसेस में आ जाएगा ना, it is nothing. As you saw, 3 चीज डालना है, खोलना है, रिलीज करना है, क्या चीज इसमें। नहीं, फिर भी वसुधा, आई मस्ट से कि जब मैंने स्टार्ट किया ना तो आई वाज नॉट सक्सेसफुल इन द फर्स्ट बैच। पहले मेरी जो बैच बनी ना उसमें बहुत स्मेल हो रहा था, तो जहां भी मैं उससे पोछा लगाती थी तो थोड़ा वो एरिया स्मेली हो जाता था। फिर उसके बाद आई हैव स्टार्टेड मेकिंग अगेन एंड अगेन। तो इसमें सब में जैसे कंपोस्टिंग है, बायो एंजाइम्स, एक्चुअली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने आज से बनाना शुरू किया, कल आपके हाथ में रेडी प्रोडक्ट है। यू नीड टू एक्चुअली सिट्रस बनाओगे तो स्मेल गंदा रहेगा ही, नहीं आता है। गार्बेज एंजाइम you cannot use for home thing. Yeah, so Meena ji is actually raising hand. Yeah, Meena ji, what is your question? See everybody. No, my question is like हम लोग 2 जने घर में हैं, हमारा 1 कप चावल बनता है, उस चावल का मैं 10 कप्स बनाने को तो मुझे 10 दिन लग जाएंगे, isn't it? तो मैं क्या करूं, उसको फ्रिज में रखकर स्टोर करके फिर 10 कप बनाऊं या क्या करूं? I am clueless. हाँ, मैंने कभी एक्चुअली फ्रिज में स्टोर करके बनाया नहीं है, बट वी कैन इजीली ट्राई इट। और या तो ये भी कर सकते हैं कि आप ले लीजिए, पड़ोस से ले लीजिए। प्लीज मैं तो 5 कप करके बनाती हूँ, बिकॉज हम लोग भी 2 ही जन हैं। 5 कप करके बनाती हूँ तो जल्दी बन जाता है। 5 कप का बनाया, आधा कप गुड़ लिया, इंस्टेड ऑफ 10 कप मैं 5 कप करके बनाती हूँ। Okay, good idea, madam. Thank you so much. Aditi, you want to say something? थोड़ा सा ये बना शीला, बहुत ज्यादा दूध का मत बना। प्लीज
those who are not asking any question, please mute yourself. Sheetal ji, I just wanted to ask another question. Will you be able to give a starter for bioenzyme? As Where do you stay actually? I'm staying in Kolkata in Okay. Highland Park, but you Okay, can Highland tell me, I can come and take it from you. Okay, okay. You just message me in my WhatsApp number, na? Then we will talk accordingly. Okay, Yeah, okay, yeah. okay. Because Thank I'm you. regularly giving starter to many people, so even I need to check about my stock. Yes. Okay, okay. Yeah, yeah. Okay, we have a surprise here for you all. I can't see everybody, but we have a Yeah, surprise. just a moment. Let me put it on the gallery view. And please switch on your cameras now, those who are attending and those who are actually, yeah, please. Thank you. Thank you so much. So that we can see who all are watching with us. And have anyone get ready with the ingredients and have you made it along with Vasudha? Is anyone there? किसी ने बनाया है वसुधा के साथ? Because in our Bijam WhatsApp group we have shared the, okay, Bharati ji आपने बनाया. Can you show it? Can you show it? I'll just get it from there. Okay. मैं लेकर आऊंगी. Yeah, sure. मैं just थोड़ा बताना चाहती हूँ. Yeah. Can you see this? हम लोग है ना काफी मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जैसे गिलोय का हुआ या फिर मोरिंगा हुआ, मोरिंगा लीव्स हुआ, उसकी फली हुई, उसके बीज हुए, उन सबके हम लोगों ने बनाए हैं. अच्छा, बायोएंजाइम्स बनाए हैं. तभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कौन सी चीज किसमें यूज कर सकते हैं. अभी तो फिलहाल सब शुरू कर दिया है बनाना. 3 महीने के अंदर बनेंगे तो एक साथ सारा लॉट, हर फ्लावर का, हर फ्रूट का, काफी लीव्स का. जैसे मैं वसुधा के ग्रुप से ही हूँ. एंड देन वी ऑल डिसाइडेड कि जिसको जो मिलता है वो बनाएगा. एंड देन फिर बाद में एक बार बनेगा और हाथ में एंजाइम रहेगा तो हम उसके और भी ज्यादा यूजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं. Right. Get some bottles of that. Yeah. A few bottles. So do we have any surprise, Vasudha? Yes, we You have were asking? surprise. Yeah. Shrikant ji, are you there? Hello. Hello. We can ask him to unmute. Yeah. So hi, very good evening. How are you all? In a white paper. So I think I will not say much. I'll just put the baton in your hand. Baton? Yeah. You're passing the baton to me. Actually, I think Vasudha, you need to introduce because many of us are not actually aware It's been about like 2 Shrikant weeks ji. since I know him, and it's what should I say? I'm just He has Shrikant. left everything to go internally inside to search himself, and he is one of the person behind creating this Bioenzyme Entrepreneurs Academy and taking this further ahead. So yes, he is it is our pleasure, solution for all the Shrikant ji. problems. It is our pleasure, Shrikant ji, to have you with us on Yes. Bijam today. So He's a will you very please- senior person. I am Okay. just 2 months old, preaching people whatever little I know, but he has a very in-depth knowledge regarding bioenzyme. So we'll hear from him without any further delay. Okay. So we want Thank to you so hear much. something from you, Shrikant ji, please. Yeah, what to talk about myself? I mean, I'm just an ordinary human being, just trying to live in alignment with nature. The background, whatever you see, is not my house. I just reached here. Okay. So I keep traveling. I quit my high-paying corporate career in 2011, Wow. and then started traveling in terms of food, lifestyle, education. I've been working on a lot of sustainable aspects, and here I am. Not much to introduce about myself. I mean, I'm just Shrikant. You can know me as Shrikant. That's it.
So as we speak, I don't have, I don't do a job. I don't do a business. I quit my job in 2011, and then I started moving towards sustainable living. I come from a family where the husband doesn't work, the wife doesn't cook, and the kid doesn't go to school. So that is my family. So how to give your you a short life is introduction. going on, sir? Because it is just amazing. No, we've decided one. Yeah. So one thing what I understood that, you know, most of us, we do things what we don't like. No man likes to do a job day in and day out. No woman likes to stand in the kitchen all through for so many hours and, you know, do cooking for the entire family. Because when we get married, we are not getting married to someone who cooks food for us, right? We get married to a person who lives with us, you know, shares the dreams and, you know, shares their life with us. So I didn't like doing a job, going to the same work every day, looking at the same boss every single day and listening to the same things, you know, before we start working every single day. So it's a kind of boring thing to do for me at that point of time. So I decided I'm going to call it a quit, because I didn't want to do something monotonous. I wanted to do something different at every given point of time. So that's what, you know, our life is all about. We try to do different things and we do things differently. All said and done, nobody likes a meticulous job. See, you can't have idli for breakfast, idli for lunch, and idli for snack, and idli for dinner. Can you? You cannot. Imagine, you know, having that just one day. You will not be able to, you know, handle that. So imagine you having idli on a daily basis like this for 1 week or 1 month. You will not do this. So doing a job is same like having an idli for me. So I didn't want to do the same thing over and over and again. And although you get a pretty good salary, Please sorry. mute yourself. Yeah, please mute yourself. Please. Mradula ji, please mute yourself. Even you can mute them, Vasudha, as a co-host. Okay. Yeah, please mute them, because if they are not understanding. Yeah, so sorry for interruption. that's fine. That's fine. Yeah. So started thinking on those lines, you know, let us do things what we like the most. And what I like the most is travel. So along with my wife, because we wanted to do things together. Yeah, so we all are actually enthusiastic green crusaders, right? Because we want to learn, all the people want to learn how bioenzymes have been made, and Vasudha has explained so well that we can start our journey. Actually, I have already started. I'm talking in representation from my group. They all want to start their journey, their sustainable journey towards the nature. So what will be? I'm not able to hear you well because of some crosstalk happening. Yeah, I'm sorry. let me mute everyone again, because I have already muted them, but Why I stopped speaking is because now you can unmute yourself, sir. You can unmute yourself. Yeah, I've muted everyone. So you are on mute. So you are on mute. You have to allow him to Okay. mute himself. that's what I was saying, that, you know, you'll have to send me a request to Right. unmute me. Yeah. All right. So yeah. So when we did that, I understood that, you know, doing a job, I did not like doing a job. My wife did not like to stand in the kitchen and cook. My child did not like going to school. So we decided it's an individual decision. It was my decision to quit my job. It was my wife's decision to stop cooking, and it was my child's decision to quit school. So we just formed a team. We are just 3 different individuals living in the same family. That's it. Right. So I was asking about that we need to, the group of people from Bijam, because Bijam is a social initiative, and we are just trying our best to spread awareness about the betterment of planet Earth, right? So we just want to start our sustainable journey through bioenzymes, and Vasudha has already explained so well everything. But we need some tips from your side, how one can start this sustainable journey on the individual level. I think Vasudha
I believe very strongly she has been doing things very brilliantly, Yes. and she has said things that, you know, charity starts at home, right? So Yes. we may not be able to change many things on the planet, can we? Because we are just that teeny weeny tiny human beings on the planet, and we have been living for many years. There are other organisms living on this particular planet, and a lot of things, you know, which happen on the planet, and we have been intervening, you know, as human race. We have intervened in everything. We mined, we dug bore wells, and we extracted crude oil. We took away all the minerals, because for every you know, a small layer, you know, maybe a square meter of mineral to be formed, it takes a million years. And very easily we extract minerals. We need copper, we need silver, we need gold, we need diamonds, we need everything in our lives, isn't it? So we mine and we extract everything from earth. So whatever we could do, we cannot save the planet. Let me reiterate. So whatever we are doing, bioenzymes, some people do composting, some people do a lot of things, you know, to save the planet. We human race are just this much in the whole of the planet, and we will not be able to save the planet. What planet can do is save itself. Okay, if there is some disturbance in the Earth's crust, you know what? If there is too much of vacuum created because of mining, it just shakes itself, right? So you have earthquakes. It is trying to rebalance itself, right? If there is too much of heat quotient, which has to get cooled down, the volcano erupts, right? And if there is groundwater, the deficit in groundwater, then you have floods. He got muted again. Did I? No. Am I? No, fine. I'm not. Okay. So plan. So all we got to do is to take care of our own self, which is there in our control. Changing the planet is not our control. It's not in our control. It's not in the circle of our control. We can only influence other people to a certain extent, which is what Vasudha is doing brilliantly. But what we can do in our control is we can make that change for ourselves. We can be the change. We can save ourselves because we are responsible for ourselves. We are accountable for ourselves. हम बाहर चले आगे पृथ्वी को बचाने, you know, धरती को बचाने. हम कौन होते हैं? हम कोई भी नहीं है. हम बचा नहीं सकते हैं. हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम इतना बड़ा धरती काम कर सके. माँ को, हाँ, इतना तो नहीं कर सकते हैं. हम सिर्फ बड़े-बड़े बातें बोल सकते हैं. हमारा काम उतना बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है, right? To प्रोटेक्ट प्लैनेट अर्थ. कितना बड़ा ईगो देखिए, इतना छोटा सा मनुष्य, उसका ईगो इतना बड़ा है कि मैं धरती को बचाने चला, है ना? खुद को बचा लीजिए पहली बार. जस्ट फर्स्ट अपने आप को बचा लीजिएगा. ये बहुत अच्छे से सिखा दिया है सर. हाँ. कोविड ने ये बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि हम लोगों की कोई एक्चुअली हैसियत है ही नहीं. बिल्कुल नहीं है. नेचर के सामने औकात नहीं है. औकात नहीं है. आप तो बहुत इजीली मैं क्या बोलता हूँ, एक बेटर वर्ड आपने यूज किया है. हाँ. थोड़ा सा एकदम लोअर करके मेरे मुंह में औकात ही आया था, बट आई हैव यूज्ड द बेटर वर्ड, द नाइसेस्ट ऑफ वर्ड, बट एक्चुअली कोई औकात नहीं है. बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एज यू आर आई थिंक यू आर ट्रेनिंग पीपल फॉर मेकिंग बायोएंजाइम्स, राइट? So where do you actually stay, and where is you have any academy or what, or you are doing anything online, offline? What is your structure? We wanted to travel out there, and house was something like, you know, we felt like, you know, we have constructed a jail for ourselves. That is a house, right? And if you look at any insect, worm, bird, or animal, when it gets into a house kind of a setting, a home kind of a setting, it is purely for reproduction basis. If you look at any insect which builds a cocoon for itself, it could be a bird building a nest for itself, or any animal, you know, taking shelter in a cave or a tree or somewhere. It's only for reproduction, to get the young ones and to nurture young ones. Once the young ones grows up to an adult, they leave
they abandon nests, they abandon cocoons, and they fly away, they go away, right? But human being, he's got one sense extra, right? The five sense organisms, they know how much they can utilize the space, living space for themselves. It's only to nurture the young ones. Once the young ones is old enough, they abandon the space and they experience life as it happens to them, right? They experience total freedom. But a human being, although very intelligent, although he's got one sense extra than the other organisms, he still needs a house to live. He has to lock himself in that. So we didn't want to stay in a house. So right now, as we speak, I don't have a house. I used to live in Bangalore for quite some time. So I vacated my house and I donated a lot of things to a lot of friends, relatives, and some to my in-laws. And that's it. I have a car, I have a bike. So wherever we want, we travel in a car. We have a house in the car, which we can wash and dry it. Okay. A washable house. So yeah, so we live, we go to forest farms, we get into farms in the nature. If there are houses, we live in villages where we get some accommodation. Else we set a tent, we put a tent and we live in a tent. That's how it is. So we have been traveling. I mean, it's scary sometimes when you listen to me, but it is equally exciting. And this is happening for the last 4 years now, 3.5 to 4 years now. So it is our pleasure to have Shrikant ji, and we have heard words of wisdom from you, sir. And it's actually an inspiring story for each one of us. कि आज हमने जो श्रीकांत जी की बात सुनी कि उन्होंने जैसे कि हमने वहाँ कहा कि हम धरती के लिए काम नहीं कर सकते, बट फिर भी एक हम लोग अपना ईगो रखने के लिए भी बोलते हैं कि हम लोग प्लेनेट के लिए काम कर रहे हैं. And he actually left his job and he is working towards the betterment for planet. And he's actually training people like Vasudha, those who are again spreading the awareness for making bioenzymes and many more things. So I think it's our, just please. I have another point to add because you asked me a question, do you have any tips? So I have not completed that. अपने आप को बचाने की बात जब कह रहा था तो बीच में हमने we were speaking something else not related to. अपने आप को बचाने की बात जब होती है तो बात सीधी है. जब आप अपने वॉशरूम में एंटर हो जाएंगे और देखेंगे अपना कमोड को, राइट, तो साफ नहीं है, तो क्या अपनाएंगे? आप एक टॉयलेट क्लीनर लेंगे और उसमें पोर कर दिया, 20 मिनट वेट किया, हल्का सा ब्रश किया, क्योंकि अक्षय कुमार ने कहा कि आप 20 मिनट वेट करो, फिर बाद में ब्रश लगाओ, फिर फ्लश करो, है ना? तो हम अक्षय कुमार जी की बात सुन लेते हैं और 20 मिनट वेट करते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन जाता नहीं है, दाग नहीं जाता है. मैं जो बोल रहा हूँ दाग, वो टॉयलेट वाली दाग नहीं है, क्योंकि टॉयलेट वाली दाग तो बस आप केवल ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो काफी है, वो चला जाएगा. मैं बोल रहा हूँ टॉयलेट क्लीनर वाली दाग नहीं जाएगा, इट विल लीव अ रेसिड्यू. वो एकदम नीला रंग का जो रेसिड्यू वहां रह जाता है, और जितना भी आप घिसेंगे ब्रश से वो जाता नहीं है, बिल्कुल नहीं जाता है. आपको बहुत यू हैव टू बल का प्रयोग करना चाहिए आपको, उसका पूरा यू हैव टू लिटरली स्क्रब इट अवे, तो जाता नहीं है, तो इसको बोलते हैं रेसिड्यू. ये जो टॉयलेट क्लीनर में जो केमिकल्स होते हैं, लगभग 20 से 22 तरह के केमिकल्स होते हैं, उसका मिश्रण होता है, केमिकल्स का मिश्रण होता है, और एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ घुल नहीं मिल सकता है, बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, है ना? तो इसको क्या करते हैं, इसका जो उष्ण है उसको बढ़ा देते हैं, तो हीट कर देते हैं, उसका जो टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं. तो जाता है ये 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट में, ये इसको हीट करते हैं, वो हीट में ये केमिकल घुल मिल जाता है. और ये केमिकल जो 20-22 केमिकल जो है वो ठीक तरीके से घुल नहीं मिलते हैं, राइट? तो उसमें ये रेसिड्यूज रह जाते हैं. तो यही रेसिड्यूज जो है, जो अपने आंखों को दिखते हैं, विच इज फाउंड ऑन द टॉयलेट सीट पे दिखता है, जो हम देख सकते हैं, वो रेसिड्यूज हैं. हम लोग बर्तन मांजते हैं और उसका रिंसिंग करते हैं, रिंसिंग करने के बाद भी कोई सफेद का एक लेयर, एक पैच बर्तनों पे लग रहा है, सो दैट इज अ रेसिड्यू, है ना? वो ठीक तरीके से निकल नहीं जाता है. हम लोग कपड़े धोते हैं, हम लोग कपड़ों को निचोड़ते हैं, निचोड़ने के बाद अगर आप ओपन करके देखें तो एक सफेद वाली लकीरें होती हैं,
है ना। इसमें हम अपने अंडरगारमेंट्स भी धोते हैं, तो ये केमिकल्स जो हैं ये निकल नहीं जाते हैं पूरी तरीके से, वो रह जाता है, वो रेसिड्यू हो जाता है। और ये रेसिड्यू जो है सबका व्हाट यू से, इट इज मूल कारण बोलते हैं ना, रूट कॉज फॉर एवरीथिंग व्हाट हैपेंस। हम लोग टॉयलेट क्लीनर डाल दिया, ब्रश का हल्का सा कर दिया, फ्लश किया और वहीं बैठ गए, और हमारी जो ऑर्गन्स जो हैं वो एक्सपोज हो गए ना केमिकल्स को। केमिकल्स। और हम लोग थाली धो लेते हैं, ठीक से धोते हैं, लेकिन फिर भी उसमें रेसिड्यू रह जाता है। जो आंखों को दिखने वाली रेसिड्यूज हैं वो चले जाते हैं, जो नहीं दिखने वाले रेसिड्यूज हैं वो रह जाते हैं, और उसी में आप चावल, दाल, रोटी सब लगाकर खाते हैं, वो आपको आप लोग अंदर खा लेते हैं। और रही बात कपड़ों की, हम लोग इनरवेयर पहन लेते हैं, वो हमारे बॉडी के एकदम करीब से बहुत करीब होता है ना। सो व्हाट हैपेंस, इट इज वेरी इजीली स्किन के माध्यम से अंदर निकल चला जाता है। और जो भी साबुन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 26 सेकंड में उसका केमिकल उतार देता है शरीर के अंदर, 26 सेकंड। राइट। हर कोई जब नहाता है तो कितनी देर नहाता है? कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 45 मिनट, है ना। 26 सेकंड में ये काम कर देता है साबुन, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो अपने आप को हम बचाना चाहिए इससे। सो वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स। और ये जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, रोजाना इस्तेमाल करते हैं, इसके वजह से दो चीज तो बहुत साफ नजर आता है, स्पेशली खास तौर से लेडीज को, अर्ली मेंस्ट्रुएशन, दिस इज एन इश्यू, है ना। जब मैं पढ़ाई करता था तो 10वीं में जब मैं पढ़ता था तो हमारी क्लास की लड़कियां दे यूज्ड टू स्टॉप कमिंग टू स्कूल, वन होल वीक आते नहीं है, ठीक है। तो पता चलता है कि हाँ इनका कुछ फंक्शन होने वाला है हैदराबाद में, राइट। इट वाज लाइक दैट, राइट। बट देन टुडे इफ यू लुक एट, तो जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो इट वाज लाइक आई वाज लाइक 14 और 15 इयर्स, 14-15 साल की उम्र का था ना वो टाइम। मतलब You are on mute. You are on mute. Sheetal ji? Yeah. Okay. hear me? Yeah. Now we can. Yeah, you can hear me. Okay. So which means that the girls were about 14-15 years when they attained menstrual cycle, the first menstrual cycle. आज के जमाने में कौन सी एज के लड़कियां एज अटेंड करते हैं? 10 साल, 9 साल, 8 साल। ट्रस्ट मी, बैंगलोर में ऐसे केसेस हैं जो 6-7 साल के लड़कियां भी अटेंड की, विच इज नथिंग बट ये क्या करते हैं, दीज आर हार्मोन डिसरप्टर्स। तो केमिकल्स जो हम साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक, मस्कारा, फाउंडेशन, प्रेस पाउडर, लूज पाउडर, ये सब यूज करते हैं ना हम लोग, तो ये दे आर हार्मोन disruptors, and they are also hormone mimickers. It will mimic the estrogens in the body of a woman, खास तौर से। और early menstruation is an issue and early menopause is also an issue. Yes. 35 साल 40 साल के अंदर के लेडीज आजकल मेनोपॉजल स्टेट से गुजर रहे हैं। ये बहुत खौफनाक चीज है। इट इज रियली बैड, इट इज वेरी वर्स, है ना। जब हमारे इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है इसी केमिकल्स। Yes. Because of these. तो हम लोग अपने आप को बचाने में चले जाएंगे। So it is very nice, क्योंकि हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, 4 दिन आ गए और मेहमान की तरह जी लिए और चले गए, हम मजे कर लिए और जी लिए। तो हम मजे नहीं कर सकते हैं। आप टॉयलेट क्लीनर पे टॉयलेट क्लीनर डाल के आप वहीं पर बैठ रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इट विल अफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव। तो क्या मजे करोगे आप जिंदगी में? So it was very nice to hear you, sir, actually. Yeah. So this is very important that अपने आप को बचा लो। धरती को बाद में, धरती को धरती बचा लेगा। Actually. Yeah. Lovely. So lovely. It was a very nice message from Shikanji, and I hope everyone is taking some words of wisdom from you, sir, today. So it is our pleasure again. Once again, thanks a lot to just give your valuable time to our group, Bijam, and we are grateful to you. Thank you. Thank you. And thank you, Vasudha, for the wonderful presentation and the
Yes, yes, and I think at least minimum 5 to 10 persons will start their sustainable journey after this presentation and after this awareness webinar. So let's hope for the best. Yeah. Yes. So thank you so much, everyone. Thank you so much, participants, for joining in. Yeah. Thank you so much from Bijam. Yeah. Thank you.